friends, today we will be learning Venn diagrams basically, and we will be learning operations on sets. So first we will come to what are disjoint sets. As the name itself suggests, disjoint means they are not joined to each other. Disjoint means completely separate. So if this is 1, 3, 4, this is 7, 8. These elements will not come in this. These elements will not come in this. Hence they are known as disjoint sets. Coming to union of sets. Now suppose A is 3, 4, 5, B is 4, 5, 6, 7. So union means what? Union means basically coming together, everything is coming together. So it's A union B. So all the elements of A and all the elements of B are coming together. Hence you get A union B. 3, 4, 5, 6, 7. इसमें के भी इसमें आएंगे, इसमें के भी इसमें आएंगे. ओके, आसान भाषा में बता रहा हूँ. Now how to draw the Venn diagram? This is A, this is B. Everything will come. जो कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, सब कुछ आएगा. So this is the Venn diagram of A union B. Okay. Coming to intersection of sets. Intersection means what? जितना कॉमन है उतना ही. Now 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. कॉमन क्या है इसमें? 4, 5, 4, 5. करेक्ट. तो सिर्फ 4, 5 इधर आएगा. इसमें का क्या बचा? 3 इधर लिख दिया. इसमें का क्या? 6, 7 रहेगा. 6, 7 इधर आ गया. ओके. नाउ व्हाट इज A intersection B? 4, 5. And this will be the Venn diagram if they will tell you to draw. Okay. So you understood what is disjoint, what is union, what is intersection. We will also see about what is a complement of a set. Suppose the universal set is 1, 3, 4, 5. Okay. Set A is 1, 3. So A complement will be what? 4, 5. A छोड़ के सब कुछ जो यूनिवर्सल सेट में 4, 5 रहेगा. 4, 5. So A complement means A छोड़ के सब कुछ. Now we will see certain Venn diagrams. Now this is not given in the textbook, but it will be in the school. They will be teaching you these Venn diagrams. So we'll start with this one. So A intersection B is null. Means what? There is nothing in common. Intersection का मतलब क्या? Common. But A intersection B is null. Means there is nothing in common. Correct? तो A इसका बीच में कुछ भी नहीं आएगा. So this is the Venn diagram for A intersection B is null. Now A union B is A again. Means what? If A और B दोनों का union लेंगे तो भी तुमको फिर से A ही मिलने वाले. Means B is so small कि वो पूरा A में समा जा रहा है अंदर. It is completely inside that even if you take union again A is only coming. So this is the figure for that. Now A complement म्हणजे काय? A छोड़ के सब कुछ. तो देखो A छोड़ के ये बाकी का हमने कलर करा हुआ है. Now this is what? A union B complement. Now we saw this is A union B. तो देखो ये जो white color का portion है this will be A union B. And वो छोड़ के सब कुछ ये जो कलर किया हुआ है that is A union B complement. Now let's move to the next. A intersection B complement मतलब क्या? A intersection B छोड़ के सब कुछ. See if you can see this much part we have not colored. Okay? तो ये छोड़ के सब कुछ because this is what? This part is A intersection B और ये छोड़ के ये जो रेड कलर में लाइंस ड्रॉ किए हुए that is A intersection B complement. So now we will see number of elements in a set. Number of elements in a set means suppose A is a set which has elements 3, 4, 5. Okay, so we say n of A is 3. Now suppose A union B, there is a set in which it is 3, 7, 8, 9, 8. ठीक है? तो n of A union B is 4. Okay? तो suppose अभी कोई भी सेट है B ऐसा है ना? मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट है, 0 नहीं लिखेंगे, है ना? So n of B is 1 because there is one element in that set B. तो समझो number of elements in set B, number of elements in set A union B, number of elements in set A ऐसा. तो फॉर्मूला ऐसा है. Okay. So what the formula says?
number of elements in A union B equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Okay, so we'll start with the exercise. We'll start with exercise 1.4, wherein the first question says n of A is equal to 15, n of A intersection B equal to 29, n of A, n of B you have to find out. So we'll write this formula again. ये formula इधर लिखेंगे फिर से, correct? Then what is A union B? 29 equal to n of A 15 plus n of B माहिती नहीं ऐसे रखेंगे minus A intersection B कितना 7. Okay, therefore 29 equal to 15 minus 7 how much? 8. Okay, 8 इधर आएगा तो क्या होगा? minus 8 equal to n of B. Therefore you get n of B equal to 21. हो गया. This is the answer. देखो कितना इजी है. 2 मार्क के लिए आएगा. ये फॉर्मूला लर्न करना ही करना है. 10th स्टैंडर्ड में लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, 11th स्टैंडर्ड में लगेगा, 12th में लगेगा, जिंदगी भर लगने वाला है. ओके, दिस फॉर्मूला. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. रीड द सेकंड क्वेश्चन केयरफुली एवरीबॉडी. In a hostel there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Okay, before we start this, ये intersection मतलब क्या? And this means what? Or. ठीक है, देखो ना अपन, if it is in A and B then only we take the element. If it is like this and union में हम लोग क्या लेते हैं? A का भी लेते हैं और B. Even if it is in A or even if it is in B, we are taking it. Okay, so let T be the set of students drinking tea. Now let C be the set of students drinking coffee. Okay. 20 drink tea and coffee both. So what can we say? N of T कितना? 80. N of C कितना? 60. 20 drink tea and coffee both. Tea and coffee both देखो, and this is used for and. Tea and coffee both. How many students? 20. Okay, so now what does the formula say? Number of students drinking tea or coffee. Correct. हमको क्या चाहिए? Find the number of students. Find the number of students who do not drink tea or coffee. So first we will find the number of students who drink either tea or coffee. बाद में उसके देखेंगे. तो देखो number of students who drink tea or coffee is what? N of T plus N of C plus N of T intersection C. तो ये कितना हो गया? 80 plus 60. Sorry, it's minus here. Minus 20. तो ये हो गया 80 plus 60, 140. 140 minus 20, 120. So number of students drinking tea or coffee is how much? 120. So how many students total? How many students are there? There are 125 students. Number in universal set is how much? 125. So number T complement. देखो ना, these are the number of students drinking tea or coffee. तो ये क्या रहेगा? टी और कॉफी वाले छोड़ के सब कुछ कॉम्प्लीमेंट. म्हणजेच काय? कितना आएगा ये? 125 minus 120. देखो टी और कॉफी वाले ये 120 छोड़ देंगे, टोटल 125 है. तो कितने? 5. Therefore answer 5 students
drink neither tea or coffee. Everybody understood? If you have any doubt, you can call me later. Let's start with the next one, question number 3. In a competitive exam, 50 students passed English. So number of students who passed English, 50. 60 passed in mathematics. 40 passed in both the subjects, English and mathematics. How many? 40. None of them fail in both the subjects. Find the number of students who passed in at least one of the subjects. म्हणजेच क्या निकालने? Number of students who passed in either English or in maths. Who passed in either of the subjects मतलब English और maths. तो क्या होगा? N of E plus N of M minus N of E intersection M, that is equal to 50 plus 60 minus 40. ये कितना? 110 minus 40 कितना होगा? 70. Therefore 70 students passed either in English or in mathematics. समझ में आया बच्चों? Let's move to the next one. Let's move to the third question. A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing. So number of students of rock climbing is 130. 180 students informed as sky watching. Sky watching कितना? 130. Sorry, 180. There are 110 students who follow both the hobbies. So number R intersection S is equal to 110. How many students do not have any of the two hobbies? Okay. Now this thing we will do by Venn diagram. तो देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग. Venn diagram बनाया. Okay. Now this is R, this is S. Always remember in Venn diagram कभी भी सेंटर से अंदर से शुरू करना है. अगर तुम लोग बाहर से शुरू करोगे तो 101% आपका रॉन्ग ही आना है, कुछ भी हो जाए. ठीक है, अंदर से शुरू करना है. तो ये कितना है? इधर 110. देखो ना, R इंटरसेक्शन एस 110. अभी ये R में टोटल कितने हैं? 130 है, उसमें से 110 तो इधर लिख दिए. तो बचे कितने भाई? 20. करेक्ट. एंड इधर कितने? 180. इसमें से क्या 110 इधर लिख दिए, तो इधर कितने बचे? 70. करेक्ट. सो नाउ देखो R के इसमें कितने आएंगे? 110, ये 20. यू गॉट 130. S के सेट में you should have 180 students. 110 students are here, 70 students are here. You got 180. करेक्ट. ये मिल गए. अभी भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए तुम्हारे? देखो अभी 110, 70 कितने हो गए? 180 प्लस 20, 200. लेकिन सर्वे कितने बच्चों का किया? 220 बच्चों का किया. तो 20 बच्चे कौन है? जो जिनको ना रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना स्काई डाइविंग पसंद है, सॉरी स्काई वॉचिंग पसंद है, उनको तो पबजी पसंद है. करेक्ट. तो ये 20 बच्चे इधर आएंगे पबजी वाले. राइट. सो ये अपना वेन डायग्राम बन गया. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी टू हॉबीज? तो पहले सवाल का जवाब क्या है? 20 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव any of the two hobbies. How many of them follow the hobby of rock climbing only? So see, these are the 20 students जिनको सिर्फ rock climbing पसंद है और ये sky watching पसंद नहीं है. So second सवाल का जवाब क्या है? Again 20. How many students follow the hobby of sky watching only?
तो थर्ड सवाल का जवाब है 70. I hope it's very easy. See, this much part is only sky watching and this much part is both of them. Okay? Okay, we are done with the fourth one. Let's move to the fifth question. So this figure is given to you. X, Y, Z, M, N, P, Q, R, S, T. This is set A, this is set B. ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है. नाउ तुमको लिखना है A, B एंड ऑल दैट. ओके, देखो A में क्या आएगा, जितना भी A के सर्कल में है उतना क्या X, Y, Z, M, N है ना. बहुत इजी है. B तुम लोग लिख सकते हो खुद से, जो भी B के सर्कल में आएगा वो. नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, A यूनियन B. करेक्ट. A यूनियन B मतलब A के भी B. ये MN दो बार लिखेंगे क्या, नहीं, MN एक बार ही लिखेंगे. देखो X, Y, Z, M, N, P, Q, R. Finish. This is A union B. Correct. Now U यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, सब आएंगे ये बाहर के भी. S, T, X, Y, Z, M, N, P, Q, R, S, T, everything will come. Okay. Now A complement. A complement बोले तो what, A छोड़ के सब कुछ. करेक्ट. सो ये सर्कल छोड़ के सब कुछ क्या क्या आएगा इसमें, P, Q, R, S, T. ओके. देन नेक्स्ट कम्स B complement. क्या है, B छोड़ के सब कुछ, तो क्या क्या आएगा उसमें, X, Y, Z, S, T. X, Y, Z, S, T. ओके. एंड नेक्स्ट इज A union B complement. A union B complement. तो मतलब क्या, ये पूरा A union B है, वो छोड़ के सब कुछ, मतलब क्या रह गया, S और T. ओके. So we are done with problem set, practice set 1.4.